maybe there would be a little lag. Let us see that. ঠিক ready না স্যার এবার ঠিক আছে ঠিক আছে okay now first thing is that we learned that if there is a straight wire conducting current I, jaldi karna likhte raho, then at the axis of that wire there is a point P. At the axis of that wire, say a current I is passing through this. Now there is a point at the axis of this wire. So magnetic field at the axis of a current carrying conductor straight is 0. This is point number 1, today's first point. The magnetic field where at axis of a straight wire is 0. No magnetic field is there. First point over here. Next page. Second idea. So let us do this thing. This is a current carrying conductor. Then draw a semicircular arc. স্যার এটা বোর্ডের কপিতে লিখবো তো Border copy. This is a semicircular arc. These are all for boards. Semicircular arc of, say, radius smaller. Now the center here, O. Same current passes through this, same current passes through this. Now the idea is, from this, now the idea is, draw these dots also. স্যার একবার আগের স্লাইডটাতে যাবেন This one. হ্যাঁ স্যার এক সেকেন্ড So this is the magnetic field at the axis of a straight wire. That is equal to 0. That was the first point. হ্যাঁ স্যার And the second point is this. We are going to do a numerical. First numerical of magnetic field intensity due to these type of wire frames. First point is, the idea is, this is a type of a wire. What type? Straight. This is a straight wire. This is second type of wire. This is first type. Straight. This is how circular. And this is another type of wire. I mean the similar straight wire again. So we have to do what? We have to find magnetic field at O. Magnetic field at O is how much? That is the question. So we have to do what? We have to find magnetic field at O with vectors. Is the vector sum, that is the resultant vector, due to the part 1 of the wire, that is a straight wire, part 2 of the wire in vector form, that is this circular form, though it is a semicircle, but the form is circular. That's why I have written circular. And then again, the magnetic field intensity due to the third part, that is again straight. Now, if we are writing vector form, we will do what? We will just put I cap, J cap or K cap either, or we will put dot or cross. Anything you like. Dot means towards the reader, that is K cap, and cross means inside, inward, that is minus K cap. minus So B1 vector, magnetic field due to this straight wire. This straight wire has the point O on its axis. Has the point O on its axis. So magnetic field intensity for first wire at a point which is the axial point of the wire 1 or the segment 1. That's why magnetic field intensity at O is 0 due to segment 1. Same will be for segment 3. Third segment, this one.
the magnetic field intensity due to this wire at a point at its backside, but still this is again the axial position. That means what? This case, axial position. If the point lies in front of it or at the back of it, in both the cases, magnetic field intensity at any point along the axis of this wire is zero, be it front, be it back. So let us be back. So for the third part segment, the magnetic field at O is again zero. So what magnetic field is there at O is only due to this circular arc. So let us find B2. I'm using different color. Let us find B2. B2 would be, do you remember magnetic field due to a circular coil at its center? Yes, sir. Mu naught by 4 pi. Yes. Then Kavita, 2 pi I divided by radius r. 2 pi I by r. But this magnetic field is due to the whole circular part, one complete circle, but it is half a complete circle. That's why into Divide by half. 4. Into Yes. half. Into half. So magnetic field also becomes half if the wire is half the complete circle. Okay, that easy it is. Now we have to give it a direction, and then comes our right hand. Other than writing this, that is, you have to place 4 fingers. I have told you, whatever is bent or circular, you place your 4 fingers along that, and whatever is straight, that will be obtained by the direction of thumb. So if we see that the current is circular here, so let us place these 4 fingers of our right hand along this. So the thumb points inward. Along this, thumb points inward. So inward means dot or cross. Inward. Sir, cross. Very good. Very good. Cross. Cross means you can also write minus k cap. That is also true. Anyway, so this is cross. So this is the answer. Let us simplify it. This 2 and this 2 cancel out. This pi and this pi cancel out. So it becomes mu naught I divided by 4 r. Mu naught I divided by 4 r. That is the answer. And by the side of it, you may write cross or you may write minus k cap. Both have same meaning. So this is the answer. So what we learned from this sum? Divide the picture in number of parts depending on their nature. This is a straight wire. This is a circular arc. This is again straight. So we see 3 different parts are there in the given picture. So we found magnetic field as the vector sum of these 3 magnetic fields due to first segment, second part and third part. We found first part and second part produces no magnetic field, as the point where we are going to find magnetic field lies on the axial position of the first, on the axial position of the third. So they became 0. Only the magnetic field produced at O is due to this circular part, that is semicircle, half circle. So we put the formula for a circle, magnetic field due to a circle, and then we multiplied it by half. That's it. Okay, let us move on for next sum. Next one, we can do it like this. Say this is an arc. This part is a wire. So the wire is P, Q, then R, then S. And current is flowing through this, like this, I. So once I current flows through this, then again I current comes out of it, again I current, again I current. How many segments are there according to you? 4 segments. Very good. 1, this is 2, this is 3, and this is 4.
out of which 2 segments are straight and other 2 parts are circular arc. If I current passes through this, and if this radius is say r and this radius is say 1.5 r, then what is the magnetic field due to these 4 parts at the center O? So question is, what is the magnetic field O? B at O again. For same good old reason, we can say, let us first write it in terms of, as I told you, vector B at O is due to 4 parts. B1, let us say B1 due to this first part, B2 second part, B3 third part, and B4 fourth. Write them like this. Now let us put the values. Can you tell me which parts will have 0 magnetic field intensity at O? 1 and 3. 1 and 3. 1 and 3. Very good. 1 and 3. Because O lies at the axial position of 3. Axial position like O lies at the axial position of 1. Yes. So magnetic field due to 1 and 3 become 0 and become 0. 1 and 3 become 0 magnetic field. So the magnetic field is only due to B2 and B4. Let us put these values. You may get 3 marks for this if this comes in exam. So magnetic field due to second segment would be, say, mu naught by 4 pi. Then Kavita, 2 pi I by R. 2 pi I by R. So same current I flows through all the segments. So I have taken common 2 pi I. So what remains is R only below this. So 1 by R will remain. And that R is 1.5 R. Okay. Let us see now its direction. Don't forget, every time you put the value of any magnetic field, do not forget to put its direction. That's why I'm telling you to do this in vector form. That will help you, remind you that thing. You need to put direction. Let us place now these 4 fingers along the direction of current. So we see this current flows in this direction, anti-clockwise through second segment, segment number 2. So this magnetic field will be dot. Okay, done. Plus B4. Okay, B4, but B4 has an opposite direction of B2. B4 is in this sense, clockwise. So if you place this clockwise, yes, cross. So let us first write 1 by R, because we have taken common 2 pi I divided by R. R is only R. Okay, and the direction is cross. Now if you put the values, mu naught by 4 pi, okay, 2 pi I. Now 1.5 R. Tell me 1.5 R is nothing but 3 by 2 R. So 2 goes up. We could have done another thing. We could have taken R common as well. So it is only 2 by 3, but dot plus 1, but cross. Should we add dot and cross, or should we subtract dot and cross? Subtract. Now which one is greater? Dot or cross? 1 is greater or 2 by 3 is greater? Cross is greater. 1. So net resultant will be cross. And let us subtract this. So mu naught by 4 pi, 2 pi I by R into 1 minus 2 by 3. Cross minus dot. That is 1 by 3. Okay? And what remains? Cross. The greater one will remain.
The greater one is 1. Or you may think it like this, because these are initial stages. Cross means negative k cap. Negative k cap. And dot means positive k cap. So you can well understand it would be 2 by 3 k cap minus 1 k cap. So it would be minus 1 by 3 k cap. So minus 1 by 3 ke badle mein I have written 1 by 3 and k cap minus k cap cross. So anyway, if you understand this, this is the answer. Now you can always cancel this 2 pi and 4 pi by 2. So the answer is mu naught by 6r cross. That is the answer. So these are the cases, these numericals you should solve. There are lots of such numericals. You have to solve for this. These were the effects of magnetic field due to a circular wire and a straight wire. Now we would be doing today. স্যার বলছি এটার অ্যাঙ্গেলটা স্যার হ্যাঁ এটার অ্যাঙ্গেলটা কনসিডার করছি দাঁড়াও এক সেকেন্ড ওইটাতেই যাচ্ছি এটাকে একটু শুধু সাইডে নিয়ে আসি নাও the angle made by this is same for both if the angle is given say 60 degree. Tell me, should we go inside this or should we take that angle common? Let us take that common. So if the angle is 60 degree, do not forget this formula that I had told you into theta by 2 pi. Do you remember that? Theta by 2 pi. At the last, yes, theta by 2 pi. That means for 2 pi, that is full circle, the value is this much. So for a circular arc theta, value would be theta by 2 pi. Now what would be this theta by 2 pi? Let us calculate by the side. Theta by 2 pi is 60 degree by 360 degree, that is 1 by 6. Or you can say pi by 3, 60 degree by 2 pi, then also 1 by 6. So either put both of them in degrees or put both of them in radian. So theta by 2 pi gives us 1 by 6. So we will just multiply this answer by 1 by 6. Multiply this answer by 1 by 6. So what is the net answer then? 6, 3 and then 2. 36. Mu naught I 36 R. And the direction is cross. That is the answer. Okay. Now let us go to স্যার বলছি স্যার মানে এক্সামেও কি ক্রস দিতে পারি না মাইনাস কে ক্যাপে লিখতে হবে? No, you can always apply cross, no problem. Okay. Let us go to this. Motion of charge particle in magnetic field. Motion of charge particle in magnetic field, that is actually the chapter is in the name of this, motion of charge particle in magnetic field. So we will start with this thing, Lorentz force. Write this thing, Lorentz force. I'm telling you what is it. Lorentz force. Then write something that I'm telling you. Lorentz force. Okay? Write something like the force acting on a charged particle. The force acting on a charged particle in a space where both electric and magnetic fields are present.
I'm repeating. The force acting on a charged particle in a space where electric and magnetic both fields are present is called Lorentz force. Force on a charged particle where electric and magnetic both fields are present is called Lorentz force. That means Lorentz found an empirical formula, that is force acting on a charged particle. Look at the formula. There are three characters. One is there has to be a charged particle. Okay, this is number one. Second is, as you have written the Lorentz force, second is there has to be a magnetic field. There would be an electric field as well. I am coming to that later. Third is it has to move with a velocity. It has to move with a velocity. So these three conditions have to be there. If there is a charged particle Q, if it is placed in a magnetic field B, but if it is not given any velocity V, then nothing will happen. It will stay idle there. No force will act on it. So these are the three cases. A charged particle placed in a magnetic field should be given a velocity V. Then something will happen. A lot of things will happen. What are those things? So Lorentz found that if these three things are met, these three conditions are met, then what will happen? Then the charged particle will experience a force given by F suffix m. Why F suffix m? F is the force, m is the force offered by the magnetic field on the charged particle. So that's why m means magnetic field. Will be how much? It would be the charge itself Q into cross product of velocity V vector and magnetic field B vector. Let me tell you a shortcut. Wherever you find magnetic field from now on, magnetic field B for बाद में, that means it will come later. बाद में आएगा ये. That means V cross B की B cross B. If you forget this above, and whatever formula we are going to do in future, B for बाद में, that means B will always appear later. So velocity vector cross B vector, that would be the Lorentz force acting on a charged particle. Now, if this is the force acting on a charged particle, that can be written vectorically as this Q V cross B. Now, why am I erasing this? Because this is only the force experienced by a charged particle in a magnetic field B moving with a speed V. What about this? The force experienced by a charged particle when placed in an electric field. We have done this earlier. F equals to EQ or QE. E is the electric field vector and Q is the charge. And F suffix small e represents the force acting on the charged particle due to the electric field. Electrostatic force. Electrostatic force. This is due to magnetic field Fm. This is due to electric field Fe. Now, what if both the fields are present in a magnetic field? Then, So vectorally add करते होगा. yes. Then we will do this. If we add them, why add? Can we subtract them? No. Because vector addition means resultant of those two forces. So it will always be added. So it would be addition of this plus this. Do we see that Q, which is a scalar quantity, is common in both? So we have taken Q common here. Q has been taken common. So if Q taken common, then here vector E is there and here V cross B is there. So this is called Lorentz force. We may not write this down. This is called Lorentz force, F. So this is Lorentz force. We understood the definition. We did this earlier, that is motion of a charged particle
in motion of a charged particle in electric field. You remember this plus charge and plus plate and minus plate of a capacitor. This was the Yes, sir. charge particle Q, and when electric field applied E from positive to negative, the charge particle followed on what path? Parabolic path. Parabolic path. We have done this. তো যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থাকে তবে যেটা একটি এক্স ডাইরেকশনের ভেলোসিটি থাকে তবে প্যারাবোলিক পাথ ফলো করবে। Yes. So let us be back. So we did electric field E. If a charged particle is given a speed in an electric field, it follows a parabolic path. Okay. But if a charged particle is projected in a magnetic field, then it will not follow elliptical path. It will follow circular path. So this is next idea. If a charged particle is projected in a magnetic field, it follows circular path. Why will it follow circular path? Let us see that. So what happens? Let us see that. What happens? You have written this? I'm moving on. Yes, sir. What happens if there is a magnetic field like this? Say a magnetic field B exists here. B. Now let me put a cross here. Cross magnetic field B. That means magnetic field is along this direction. Now if you throw a charged particle in this direction with a speed V, this is the charged particle. So all those three conditions are met. You have projected a charged particle in a magnetic field with a velocity V. तीनों हो गया. P, Q and V. Then what will happen? Let us see this. लेंस भाई साहब तो बोल दिए कि भाई फोर्स ऐसा होगा कि Q बाहर रहेगा. V क्रॉस B ना B क्रॉस V. क्या क्रॉस क्या था? B क्रॉस B कारण कि B बाद B for बाद में. V cross B. Now we know the cross product idea. If velocity is along this direction and magnetic field is along this direction, then the cross product will be Perpendicular to both. perpendicular to both. And in which direction? A cap है। Let us find this. This is the magnetic field. अरे ये क्या है? Cross. This is the magnetic field. Okay. And let me take a pen. Let me take this pen. This is the direction of velocity in this direction. So what would be the direction of force? V cross B. Q को छोड़ दो. Q तो स्केलर क्वांटिटी है. V cross B. वेलोसिटी V जो पहले आता है उसमें 4 फिंगर राइट हैंड का. वेलोसिटी V पे बैठा है. फिर इसको टर्न करेंगे टूवर्ड्स दिस मैग्नेटिक फील्ड. सो V क्रॉस B. थंब किधर हो रहा है? ऐसे. अब इसको घुमाते हैं ऐसे लाइक दिस. ओके. V क्रॉस B. थंब तो अपवर्ड्स हो रहा है. दैट मींस force on this charged particle will be upwards. That means force on this charged particle would be in this direction. This would be the direction of magnetic force, Lorentz magnetic force. Okay, अब क्या होगा देखो. एक particle सामने जा रहा है. A particle is moving in forward direction. Imagine. And you are applying a force upwards. तो एक फुटबॉल जा रहा है सामने, उसको धक्का दे रहा है ऊपर. तो it will be in a dilemma कि भाई क्या करें, सामने भी स्पीड है ऊपर भी धक्का है. तो it will follow a resultant path. तो ये दोनों का resultant मान लो ऐसा है. So it will move in a resultant path. But that resultant path के along थोड़ा ही दूर जाएगा
सपोज यहाँ पे, then the direction of velocity would be along the tangent. सपोज ये यहां से यहां तक ऐसे गया, यहां पे आया, the new velocity would be along this, along the tangent, और magnetic field उधर ही रहा. So if the new velocity is along this, magnetic field तो same है, but the velocity पहले सीधा था इधर, straight along this direction, but ये अब along इस direction में हो गया ऐसा टेढ़ा करके, like this, ऐसे, in this direction. So what will happen? V cross B, thumb भी ऐसा हो जाए. Can you understand this? V inward, sorry, V सामने, V হচ্ছে এই পেনটা দেখো, this pen is V, this direction, okay, and B is inward, so V cross B, V ये तो V velocity cross B, thumb either. Now I'm changing this. It was upward when the velocity was straight along x-axis. Now the velocity moved. Now the velocity moved. Upward हो गया velocity. तले ये भी तो move करेगा ना thumb. So thumb will also incline like this. If the velocity inclines like this, तो thumb तो इसका दोनों का साथ perpendicular होगा like this. इस direction में हो जाएगा ऐसे. So at that point, the force will be along this direction. फुटबॉल इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये तो दोनों का बीच में से जाएगा, तो इट विल मेंटेन सम पाथ लाइक दिस. नाउ द वेलोसिटी अगेन बीइंग टेंजेंट, ऐसा हो जाएगा. अब तो ये ऐसा हो गया, वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड वही इनवर्ड्स, बट वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड्स हो गया ऐसे. So if this is upwards, now V cross B, फिर से देखो, V cross B, perpendicular to both, ये जो V pen cross B, magnetic field, ये अब ऐसे हो गया. पहले ऊपर था फोर्स, देन धीरे धीरे ये वेलोसिटी टर्न कर रहा है, थंब भी टर्न कर रहा है, करते करते वेलोसिटी अब यहाँ पे आ गया ऐसे, अपवर्ड्स हो गया, तो थंब तो एकदम इस साइड में हो जाएगा. अब ये जो V cross B होगा ना, ऐसा था, ये टर्न कर रहा है ऐसे, तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना इस डायरेक्शन में. दैट मींस द न्यू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट वुड बी समवट टुवर्ड्स दिस. सर्कुलर पाथ फॉलो করছে. सर्कुलर पाथ फॉलो করছে. Yes, it would be following a circular path. So if this is the magnetic field, the charge particle will be moving in a circular path. Magnetic field देखो तो cross magnetic field, it is cross just like this. So what happens when the charge particle was like this here, the velocity was along x-axis, v x-axis है v velocity across b, तो सोच के देखो किधर हो रहा है, v cross b, thumb was upwards, so the force is upwards. Then what happened? ये तो moving in between these two things, सामने मोशन है, फोर्स लग रहा है ऊपर, तो वो भी तो धक्का दे रहा, तो ये बेंड होता जाएगा, बेंड होता जाएगा. तो मान लो, लेट अस कंसीडर अनदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट. कौन सा? मान लो यहाँ पे आ चुका है, तो वहां पे अगर आ चुका है, तो वहां पे when the charge particle comes, its velocity would be given by this thing. चार्ज पार्टिकल यहां पे आ गया, तो इसका वेलोसिटी तो इसका ऊपर फोर्स तो इधर होगा. सिमिलरली ये घूमते घूमते फिर से बीचों बीच जाएगा, माना नीदर अलोंग वेलोसिटी प्योरली नॉर अलोंग फोर्स प्योरली, तो ये बेंड होके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाते जाते इट विल कम समटाइम्स ओवर हियर, तो तब भी तो फोर्स ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन. दैट मीन्स इफ इट गोज टू समवट दिस पोजीशन टॉप, तब तो वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसे,
चलो वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल हो गया तो देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो वही का वही क्रॉस, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इधर हो गया तो भी क्रॉस ना 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 नहीं होगा, बी तो इधर नहीं है, बी तो इधर है, सो आई कैन नॉट turn my fingers in this direction, so I will do what? I'll rotate my hand like this. So vector b cross vector b, अब तो हो रहा है vector b cross vector b, अब तो हो रहा है. So now force is in downward direction. You know this idea of cross product. v cross b नहीं हो रहा, v cross b अब होगा ऐसे नीचे. Similarly, when the charge particle comes over here at this position, the force will be like this. और ये उल्टा हो गया, velocity नीचे होगा like this. When the charge particle comes over here, then this velocity becomes downwards. So the force now acting on this is in this direction. From these pictures, what observation we see here, observation is that force, Lorentz force, the Lorentz force is always acting perpendicular to the displacement. And second thing is Fm is always towards the center. मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंस का हमेशा किधर होगा? टूवर्ड्स द सेंटर. नोटिस करके देखो, यहाँ पे फोर्स सेंटर का तरफ था, सेंटर का तरफ, सेंटर 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 का तरफ अगर फोर्स होता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. दैट मीन्स दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होता है. Second idea is this: work done by this force, Lorentz force, work done by Lorentz force, लिखे रखो. Work done by Lorentz force equals to F ds cos theta. Work done का फॉर्मूला क्या था? Work done was given by force F dot S by F dot ds. तो F ds cos theta. Theta कितना डिग्री? Always 90 डिग्री. Theta velocity जिधर उधर ही तो displacement होगा dx छोटा सा. So what is the angle between these two? Always 90 degree. So work done by Lorentz force is 0. Second idea बना. Work done by Lorentz force is 0. Idea number 2 हुआ. Idea 3. Idea number 3. We did this in class 11. Work done. Change in kinetic energy. कौन सा theorem था ये? वर्क पर एनर्जी में सीखे थे. कौन सा थ्योरम था? वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. And according to that, this is the formula. Work done कितना हुआ? 0. Work done कितना हुआ? 0. So हाफ एम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 0. That means इसका भी उतना ही होगा जितना u था. That means एक बार मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर आ गया तो that would be moving with the same constant speed, velocity ना, speed, value same रहेगा, direction तो change होता रहेगा, but value of that magnetic field में charge particle का speed का value, माने speed, velocity का value, that will remain unchanged. So that's why ये vector v को we can write vector v1, ये vector v को we can write vector v2, ये वेक्टर v को we can write वेक्टर v3, ये वेक्टर v4 हो सकता है, but their values will always be equal.
V1, V2, and here you find the scope of MCQs. All the velocity vectors will have equal magnitude. Speed na बढ़ेगा na कम होगा. But in an electric field, if a charged particle enters, तब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? So speed तो सेम ही থাকে along x direction. Y direction में speed बढ़ते থাকে. In electric field, there is a force applied Fe. Lorentz force ही सोचो, Fe सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं मैं कितना Eq. So there would be an acceleration. How much? Force by mass. Eq by m. So the velocity goes on increasing. So in electric field velocity बढ़ता रहता है, पर magnetic field velocity same रहता है. Velocity नहीं, speed. Speed remains same in magnetic field. तो ये हो गया दोनों का idea. Last page में देखो, these were the points that we made. Number 1, Lorentz force towards the center, centripetal force. Number 2, work done 0. Number 3, speed remains the same. That means V equals to U. हर एक पॉइंट में स्पीड सेम रहेगा इसका. अब कितना होगा वो स्पीड? मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहा हूं. वो स्पीड जो सेम रहेगा वो कितना होगा? लेट अस डू सम कैलकुलेशन एंड दैट इज द थ्योरी. बट बिफोर दैट अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर करते हैं. एंड फॉर दैट आई हैव ड्रॉन this is the magnetic field intensity, upwards magnetic field. ऐसे first case. Second, ये कौन है? ये जो है PQRS. PQRS is what? PQRS is a surface which is perpendicular to the direction of magnetic field. That means perpendicular plane बोल सकते. और details में if you want to understand, can we say that vector B, मान लो कुछ वैल्यू है इसका B नॉट वैल्यू और डायरेक्शन J कैप, ऐसे लिख सकते हैं. You will find this in numericals. So this is magnetic field, some value and direction. Okay. Then ये जो plane है, this plane would be along XY plane. Sorry, XZ plane. That means I cap, K cap, IK plane. What I mean to say, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस में रहेगा उसको छोड़ के, y एक्सिस छोड़ के बाकी दोनों कौन बचा? x एक्सिस इधर और z एक्सिस इधर. तो ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन, दिस वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. ये जो प्लेन होगा along this plane which is perpendicular to the magnetic field, if any charged particle enters Q, it would be rotating in this plane only in a circular path. अगर यहां से और एक चार्ज पार्टिकल आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, तो any charged particle entering this magnetic field along this plane जो कि perpendicular है किसका साथ? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का साथ, परपेंडिकुलर. सो दैट चार्ज पार्टिकल विल बी मूविंग इन दैट प्लेन इन अ सर्कुलर पाथ. ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर पाथ में घूमे वो चार्ज पार्टिकल. बट ये थोड़ा सा डिफरेंट. दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्चुअली पेनिट्रेटिंग दिस प्लेन. ये प्लेन को पेनिट्रेट करके किया एंड इट इज नॉट अलोंग द परपेंडिकुलर प्लेन. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, उसका साथ परपेंडिकुलर प्लेन में जो भी आएगा वो उसी प्लेन में घूमता रहेगा इन अ सर्कुलर पाथ अलोंग दैट प्लेन. बट अगर कोई चार्ज पार्टिकल ये प्लेन के अलोंग नहीं है, बट दैट इज पेनिट्रेटिंग दैट प्लेन, ऐसे पेनिट्रेट करके आ रहा है, इधर से उधर से पेनिट्रेट कर रहा है उसको, पैरेलल नहीं है प्लेन का. सो नॉन पैरेलल वेलोसिटी लेके अगर आएगा, मान लो ये v, सो नोटिस करके देखो, देयर वुड बी एन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर. मान लो थीटा एंगल. देन इट विल नॉट बी ओनली अ सर्कुलर पाथ अलोंग दैट प्लेन. प्लेन को तो पेनिट्रेट करके आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा? इट वुड बी स्पाइरल, गोल गोल घूमेगा
साथ में along the magnetic field ऊपर भी उठेगा, दो मोशंस एक साथ। टू अंडरस्टैंड दिस, चले पिक्चर को समझना हो तो मैग्नेटिक फील्ड का साथ परपेंडिकुलर प्लेन, इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दैट प्लेन, तो वो उसी प्लेन में घूमता रहेगा, ना ऊपर उठेगा ना नीचे। कैसे घूमता रहेगा? इन अ सर्कुलर पाथ। बट लेट अस थिंक अबाउट अ जनरल आइडिया कि इफ द चार्ज पार्टिकल इज नॉट अलोंग दैट प्लेन, तब क्या होगा? तो तब ऐसा होगा कि देखो, दिस चार्ज पार्टिकल has entered this magnetic field B, ये मैग्नेटिक फील्ड में आया वो चार्ज पार्टिकल B, वो कैसे आया? along this plane आ रहा, तो उसी प्लेन में ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम, ये चार्ज पार्टिकल भी उसी सर्कुलर पाथ में ऐसा घूम रहा है, दैट इज अगेन along that plane। क्यों? ये along the plane ही आया, डायरेक्शन देख रहे हो? ये चार्ज पार्टिकल किधर घूमेगा, व्हाट वुड बी द एरो ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, वो थोड़ा सोचने वाली बात है, तो मैं सिखा रहा हूं, डोंट वरी। बट दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स व्हिच हैव एंटर्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड along a perpendicular plane। But let us think of this, ये दोनों है, ठीक है, पर ये ऐसे नहीं आया। This charge particle Q has entered the magnetic field penetrating that perpendicular plane। तो तब क्या होगा कि ये अगर inclined होगा तो टेढ़ा आदमी को सीधा करने का क्या उपाय है? We all know that components वेक्टर को। So velocity v, उसको ना दो दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे, एक होगा cos, एक होगा sin, डिपेंडिंग ऑन कि दिस वैल्यू इज थीटा। वो वैल्यू थीटा क्यों? ये क्यों नहीं थीटा? बिकॉज वो इसलिए थीटा है कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड সঙ্গে ডাইরেকশন দিচ্ছে, অ্যাঙ্গেল দিচ্ছে। वेरी गुड। I had told you earlier that theta must be an angle between two vectors। तो यहाँ पे वेक्टर 1 मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर 2 the velocity of this charge particle। तो these two vectors, वेक्टर v and वेक्टर b, तो दोनों का बीच का एंगल को ही तो थीटा बोलेंगे, तो बस वो थीटा। तो इन दैट सेंस जस्ट ये देख लो कि कैन यू अंडरस्टैंड दैट व्हिच कंपोनेंट वुड बी v cos थीटा एंड व्हिच कंपोनेंट वुड बी v sin थीटा। इतना समझ में आया? अब लेट मी टेल यू वन थिंग। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल दे वर एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस प्लेन, तो वो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड B का साथ कैसे था? दिस प्लेन वाज परपेंडिकुलर, ठीक है ना? मतलब ये जो चार्ज नंबर 2 आया, तो चार्ज नंबर 2 का वेलोसिटी जो था v, वेलोसिटी ऑफ चार्ज नंबर 2 v, तो वो तो था ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन जो है अलोंग दैट प्लेन ऐसे आ रहा था चार्ज नंबर 2, तो वो क्या किया? उसी प्लेन में ऐसे घूमता गया। कैन वी सी नाउ that the velocity v sin theta is also now along that plane? Yes sir। है ना? v sin theta along that plane हो गया, अब कंपोनेंट ले लिया, and v cos theta is a velocity which is along the magnetic field direction। अब होगा क्या देखो, applying लेंस लॉ, Fm का वैल्यू इतना हुआ था, Q कॉमन था बाहर और B क्रॉस V, सो B Q और V उसका साथ कौन सा थीटा हो जाएगा? साइन थीटा। फिर से लिख रहा हूं, दिस वाज गिवन बाय Fm इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, but it was vector। Now if we just consider the magnitude only, then F is given by B Q V, तीनों को लिख दिए, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? साइन थीटा, थीटा बीइंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स V and B, ये तो है V and B का एंगल थीटा।
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंस फोर्स, जस्ट वैल्यू अगर फाइंड करना है इससे करना। इसका केस 1 में देखो तो क्या हो रहा है, केस 1 इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री कौन सा कंपोनेंट का साथ है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हिच वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, v cos थीटा। चलो फॉर v cos थीटा क्या होगा देखो, इफ थीटा इज 0 डिग्री, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, 0, because sin 0 degree is 0. That means for this velocity component, this magnetic field इसको कुछ नहीं बोलेगा। In other ways, मैं ऐसा बता रहा हूं देखो कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा P, एक चार्ज पार्टिकल along that direction only, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे भी स्पीड लेके जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल उधर ही जा रहा है, दोनों का बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। फोर्स कितना होगा दोनों में, P Q V sin 0 डिग्री, दैट इज 0। अ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है बट अनडिफ्लेक्टेड, व्हेन इज दिस पॉसिबल, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, जो थ्योरी सीख रहे हो उसी में आंसर छुपा। But is it true? Can it happen? Yes, it can happen. A charged particle, when projected along the direction of the magnetic field, so that the angle theta between the two vectors is 0, then the force acting on the charged particle due to the magnetic field is 0. So the charged particle moves undeflected. भले magnetic field का अंदर से जा रहा, पर no force. Similarly, case 2 जो है, वो है magnetic field इस direction में है, suppose vector B, but charged particle इधर जा रहा। Now theta is 90 degree. So we can say Lorentz force becomes maximum when BQV sin theta, theta is maximum. So BQV होगा Lorentz force FM, पर सिर्फ F भी लिख सकते हो, Lorentz force, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा BQV, और वो कब होगा, जब ये फिगर होगा, पहले फिगर 1, ये फिगर 2, या तो उसको 1 इसको 2 भी बोल सकते हो। दैट मींस लॉरेंस फोर्स विल बी मैक्सिमम जब चार्ज पार्टिकल ना मैग्नेटिक फील्ड का साथ परपेंडिकुलरली मूव करेगा, और लॉरेंस फोर्स विल बी 0 मिनिमम जब चार्ज पार्टिकल ना उसका पैरेलल मूव करेगा। नाउ विद दिस आइडिया, लिख रहे हो तो, विद दिस आइडिया लेट अस बी बैक टू द लास्ट पेज। This was the direction of magnetic field. Pink color में देखो, magnetic field upwards. Okay. These are the two velocities. ये 2 velocities है। एक है perpendicular to the magnetic field. अरे इसका ऊपर तो force maximum due to this velocity. और इस velocity के लिए उसके ऊपर कोई force नहीं। अच्छा, तो इस velocity के लिए इसके ऊपर कोई force नहीं। याद रखना, इसको बाद में काम आएगा, अभी थोड़ा 5 मिनट बाद। So for v sin theta, देखो तो कुछ v sin theta is the velocity पैरेलल टू दिस प्लेन, है ना, या तो along the plane, और along the plane अगर कोई वेलोसिटी हुआ, along the plane अगर कोई वेलोसिटी हुआ, तो वो क्या करता है, helps the charged particle to move in कैसा पाथ, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हेल्प करता है। दैट मींस v sin थीटा विल हेल्प दिस चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, और v cos थीटा क्या करेगा, v cos थीटा के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, v cos थीटा सेम रहेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों अगर एक साथ हुआ तो दैट मींस इफ द पार्टिकल इज हैविंग बोथ द वेलोसिटीज v cos theta and v sin theta, that means if the charged particle comes in an oblique way penetrating the plane, we will apply both of these concepts. कैसे अप्लाई करेंगे both of these concepts? तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये मोशन कैसा हो। अदरवाइज इसी पेज में जाके एक चीज और दिखाना चाहता हूं, दैट इज
ये चार्ज पार्टिकल ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव करे, ऐसा। किसके लिए? ये सर्कुलर पाथ में जो मूव करेगा किसके लिए? ड्यू टू v sin थीटा ओनली। ये है उसका आइडिया। v sin थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गया, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड लेके कोई एंटर किया तो वो उसी प्लेन में ऐसा घूमता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का चारों तरफ, ना ऊपर उठेगा ना नीचे। बट वी सी दैट देयर आर टू वेलोसिटीज फॉर दिस। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये कौन हुआ था? v sin थीटा। इसके लिए का क्या करेगा कि द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस वेलोसिटी विल बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस, ऐसे घूमता रहेगा यहाँ। अगर सिर्फ v sin थीटा रहता है तो ये सिर्फ घूमता ही रहेगा सर्कल में, लेकिन अगर उसका साथ v cos थीटा भी है तो इट विल बी मूविंग विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। मैं थोड़ा देर पहले बोला कि 5 मिनट बाद ये आइडिया को काम में लगाएंगे, क्या कि v cos थीटा रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि ये वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा 0 डिग्री। हाँ, थीटा 0 डिग्री, नो डिफ्लेक्शन, नो फोर्स, इट विल रिमेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए ये इतना वेलोसिटी लेके ऊपर उठता भी रहेगा और v sin थीटा के लिए घूमता भी रहेगा, तो दोनों अगर एक साथ करें तो क्या होगा? ये ऐसा स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को अगर टान के ऐसे बढ़ा दो, इफ यू स्ट्रेच इट, तो व्हाट डू यू सी? सर्कुलर पार्ट एज वेल एज मूविंग अप। तो दोनों अगर एक साथ होगा तो इसका मोशन कैसा होगा? हेलिकल मोशन होगा। हेलिकल मोशन, ये ऐसे हेलिक्स में उठता रहेगा ऊपर। वी कैन ऑल्सो फाइंड लोकस ऑफ दिस, वी कैन ऑल्सो फाइंड t सेकेंड बाद उसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, बट दैट वुड बी 3D, बट नॉट टफ। वुड बी डूइंग दैट बट नॉट इन बोर्ड बैच। सो एनीवे, ये ऐसा सर्कल बना के उठता रहेगा धीरे धीरे ऊपर, किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइडिया क्लियर हुआ? टू वेलोसिटीज ड्यू टू v, टू वेलोसिटीज, v sin थीटा के लिए सर्कुलर पाथ, v cos थीटा के लिए ऊपर उठता रहेगा। नाउ इफ वी मूव फर्दर, ये पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये पिक्चर में क्या था? ड्रॉ करो इसको। ड्रॉ अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, उसको b लिखो, ऐसे डॉट डॉट करके सर्कुलर पाथ ड्रॉ करो एक। इसका रेडियस कुछ ले लो r, रेडियस r लिखो। चार्ज पार्टिकल q लिखो। देखो तीन चीज तो होना ही होना है जो शुरू में बोला था। द चार्ज पार्टिकल हैज टू हैव अ वेलोसिटी, हैज टू हैव चार्ज, एंड इट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन हो गया ना, b q v। तो b q v तो लिखना ही लिखना है, q b और वेलोसिटी v हो गया। नाउ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ऐसे एज्यूम कर लिए। तो r रेडियस का सर्कुलर पाथ में अगर ये घूमेगा, then there would be a Lorentz force acting on it। और थोड़ा देर पहले हम लोग देखे that Lorentz force always with respect to any position acts towards the center। कहीं पे भी ये जाएगा या सेंटर का तरफ एक्ट करेगा। So at this position it is along this। अब ये एक बात बताओ, Lorentz force acts as a centripetal force और उसके चलते this starts rotating in a circular path। and what is the consequence of rotating in a circular path? कोई और एक force होता है ना, if you move something in a circular path there is a force generated outward। हाँ बोलो। yes very good, centrifugal force। so there would be a force which is centrifugal in this direction। इसको ड्रॉ करो, and we know that formula, that would be m v square by r। सिर्फ v square लिखने के लिए इतना बड़ा जगह, only to write v square? no, v sin theta square। इतना देर से तो वही समझा रहे थे कि it would not be v, it would be somewhat, it would be the velocity component that is acting along the x-axis which is responsible to make the charge move in a circular path like this। so अगर सिर्फ सर्कुलर पाथ की बात करें तो the velocity to be considered should be v sin theta। okay, so v sin theta whole square, okay, m v square by r, v sin theta whole square by r। okay, so this is the thing only, nothing else। then write for equilibrium,
ये कैसा इक्विलिब्रियम है? क्लास 10 में पढ़ा था आईसीएसई में, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम नहीं, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा ना, एफ एम लॉरेंस फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय दिस एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर बाय आर। बहुत ही सिंपल और मामूली सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, देखो देखो बहुत इजी है। नाउ लेट अस पुट एफएम का बदले में लेट अस पुट पी क्यू वी साइन थीटा, बस हो गया। दिस इज एफएम। क्यू वी क्रॉस बी, तो इसका वैल्यू कितना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन थीटा होता है ना, बी क्यू वी साइन थीटा, बस शुड बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर बाय आर। एक भी साइन थीटा क्या कैंसिल हो रहा है, एक भी साइन थीटा देखो कैंसिल हो रहा है ना, ये भी साइन थीटा इसका स्क्वायर का साथ एक कैंसिल होगा। फ्रॉम दिस मिल गया, फ्रॉम दिस आर इक्वल्स टू, आर को ऊपर लेके आओ, एम भी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी क्यू, एम भी साइन थीटा बाय बी क्यू मिल गया। चलो दिस इज द डेरिवेशन दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ दैट अ चार्ज पार्टिकल rotates with when placed in a magnetic field? So this is the radius mv sin theta by bq. Okay, and next question comes, what is the time period of this rotation? That means how much time will this charged particle take in completing a single circular motion? That is nothing but, एक बार घूमेगा बताओ कितना रास्ता जाएगा, the path traveled 2 pi r if the radius is r, और कितना स्पीड से जा रहा है, v, स्पीड का बात कर रहा हूं, कितना स्पीड से जा रहा है v, तो s is equal to vt, t equals to s by v, s माने 2 pi r by v। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं v का, वैल्यू पुट करते हैं v का, सो वी फाइंड t equals to 2 pi into r means this much, कौन, m v sin theta divided by b q, ये तो हो गया 2 pi r डिवाइडेड बाय v। सो एक v देखो कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम दिस वी गेट, इसको बॉक्स कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा 2 पाई। अच्छा एक सेकंड, यहां पे क्या करना है, ये भी तो कैंसिल कर दिए, बट दिस भी अगेन वुड बी भी साइन थीटा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट रोटेटिंग विद v एक्चुअली, इट इज रोटेटिंग विद v साइन थीटा अलोंग दिस प्लेन। इसको भी v साइन थीटा लिख देना, तो ये v साइन थीटा होगा, then only the centrifugal force will become m that v square by r. So this horizontal velocity v sin theta ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे, ये v sin theta इसको ऊपर करके ऐसे दिखा रहा है v sin theta। So this horizontal velocity v sin theta, उसके लिए तो v sin theta whole square by r आया, that means ये v को v sin theta करना। So time period t equals to 2 pi r by velocity का बदले में पूरा भी तो होगा नहीं ना, ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक इट रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड तो v sin थीटा होगा। चलो v sin थीटा को ही कैंसिल कर दो, सो दिस इज 2 पाई m by bq, आंसर खत्म। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, और उसका साथ क्या आता है, फ्रीक्वेंसी n, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी QB by 2 pi m. हाँ, फ्रीक्वेंसी n मानो 1 by time period, 1 by time period. yes, so it would be reverse of this, so you can write like this also separately, 1 by 2 pi. If time period is 2 pi into something, so frequency would be 1 by 2 pi into, it was m by bq, it would be now bq by m. This is the frequency part. This is frequency.
So we got number 1 formula of radius, we got number 2 formula of time period, and we got number 3 formula of frequency. These are the 3 things. So बोलो ये तीनों में कहीं पे डाउट है तो, अदरवाइज राइट दिस थिंग. क्या राइट दिस थिंग फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. दैट मीन्स अगर 90 डिग्री थीटा हुआ, देखने में कैसा हो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड and the charge particle is entering this field like this. This is the angle between V and B. थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो बोलो what would be the path of this charge particle? Number 1 circular, number 2 parabolic, number 3 helix, नंबर 4 स्ट्रेट लाइन. पाथ कैसा होगा? सर्कुलर. सर सर्कुलर হবে. नंबर 2 पैराबोलिक. नंबर 3 हेलिक्स. नंबर 4 straight line. Sir, circular হবে. Circular. So the answer is yes, it would be circular. It will not be parabolic nor helix. Straight line और parabola तो होगा ही नहीं. बाकी helix क्यों नहीं हुआ? Because इसका भी only along x axis. Only along x axis. हाँ, भी sin theta ही यहाँ पे भी हो गया, भी cos theta बोल के कोई चीज है ही नहीं. That means this particle is going to move in a circular path like this. ऐसे move करेगा circular path, और ऐसे ही बार बार गोल गोल घूमता ही रहेगा circular path में. और अगर if it is like this कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोर और लेस कंपेयर टू दिस लेस. क्या नो स्पेसिंग बढ़ गया. That's why less. So if a charge particle enters such a magnetic field, तो वो charge particle ना ऐसे घूमता रहेगा. छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा ये. It will be restricted to move in the magnetic field only. मैग्नेटिक फील्ड का अंदर क्या हो जाएगा, ये कन्फाइंड रह जाता है. तो इसलिए चार्ज पार्टिकल अगर आता है इसे बोलते हैं मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट. तो अगर हम लोग ऐसा एक टनल बना लिए, इफ वी कंस्ट्रक्ट अ टनल जिसका अंदर ऐसे तार दे दे के मैग्नेटिक फील्ड बना दे, तार जा रहा है ऊपर से, पूरा टनल को तार से घेर दिया. जैसे मेट्रो जाता है ना अंडरग्राउंड, तो मेट्रो जैसे टनल हो गया, उस टनल का ऊपर से नीचे तक ऐसे गोल करके आउटसाइड से तार 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 ऐसा देके, इफ वी क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट,
ऐसा शेप को बोलते हैं टोरॉइड, तो उसमें बाद में जाएंगे। तो ऐसे अगर टनल बना दिया मान लो, एंड वी क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, तो इसमें अगर चार्ज पार्टिकल कोई भी एंगल से निकला, किधर भी निकला चार्ज पार्टिकल, तो इसका अंदर ही घूमता रहे, इट विल नॉट कम आउट। हाँ, चार्ज पार्टिकल, लार्ज हेड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन। सो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। ये पिक्चर ड्रॉ करके रखो, ये पिक्चर, ये कोई हाई लेवल थ्योरी नहीं है, नॉर्मल है, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। लेकिन ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, ये मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट अगर ऐसा हुआ, ऐसा, तो वी कैन रेस्ट्रिक्ट अ मैग्नेटिक फील्ड। इतना तो सीख गए ना। लास्ट पार्ट उसको ऐसे सीखते हैं। दिस इज सपोज अ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे है B. This is moving with a speed v. Now, this charge particle will take a turn in a circular path. Which path will it follow? স্যার বি শুধু উপরে আছে তো? हाँ हाँ, B is acting like this, magnetic field cross from top to bottom, all along magnetic field cross, and a charge particle, if nothing is given as the nature, consider it positive. Now the charge particle enters the magnetic field like this. Will it move following 1, following 2, or following 3? So 1. 1. Sir, 1. Right answer. Right answer is this. It will follow 1. Shortcut बता रहा हूँ. I am also telling you why will it happen. Shortcut बता रहा हूँ पहले. क्या? मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट हुआ, डॉट डी से होता है, डॉट फॉर दाहिने, याद रखना, डॉट फॉर दाहिने माने राइट साइड। इफ इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट, तो चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स द राइट लाइक दिस। कि अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, like this, and a charge particle is coming like this. If nothing is given, I have told you plus q ले लेना. There is a second figure. Then dot for दाहिने, that means ये तो ऐसे bend हो गया. Dot magnetic field, ये आ रहा है ऐसे, left hand right hand दाहिने bend करेगा, दाहिने. तो क्रॉस फॉर बाएं. otherwise the idea is like this, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्रॉस, हाँ, और वेलोसिटी फ्रंट, ऐसे फ्रंट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, पतला पेन को सोचो, वेलोसिटी v क्रॉस b, थंब किधर, अपवर्ड, तो इसका ऊपर फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, तो ये सामने भी जाएगा ऊपर भी उठेगा, दैट मींस सामने भी जाएगा ऊपर भी उठेगा, दैट मींस ऐसे घूम जाएगा इन अ सर्कुलर पाथ. दिस वुड बी द डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज शॉर्टकट. डॉट फॉर दाहिने ऐसा होगा, क्रॉस फॉर बाएं ऐसा होगा. दिस इज द राइट पाथ फॉलोड बाय इट. अब लास्ट पार्ट एक बताया था, बस छुट्टी. लास्ट पार्ट दैट इज सर, बोलो सर,
স্যার সেটা ওই ভি ক্রস হলে পরে স্পাইরাল হেলিক্স পাথ ফলো হবে না? কি না হলে বলো? ভি আর বি মানে গ্রাফটা যেটা হচ্ছে তো সেটা তো স্পাইরাল হেলিক্স পাথটা হচ্ছে না। এইটা না, এইখানেই তো একটা বুঝবার আছে জিনিসটা। এই যে দেখছো বি, বি ক্রস মানে কি বলো তো? এমনি আছে ইনওয়ার্ড, 3D তে বাবু ইনওয়ার্ড বি ক্রস, ভেলোসিটি ভি এরকম আছে। এদিকে থিটা কত ডিগ্রি? ভেলোসিটি ভি আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি এর মধ্যে থিটা কত ডিগ্রি? ভি আর বি এর মধ্যে থিটা, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল থিটা? 90 ডিগ্রি। If theta is 90 degree, if theta is 90 degree, have we done this thing? It will not be having any velocity upwards. That's why it will be following circular path only. And another thing, so it will not be helical, circular path. Here, this is the magnetic field. This is the theta 90 degree. So it will move in a circular path like this. And what will happen, I'll tell you. But before that, but it is circular, not helical. कैसे समझेंगे when it is circular or helical or purely circular? Theta 90 degrees circular. That's it. Now another thing that is called pitch. The path traveled in one complete rotation by the church party. Charge particle is मत लिखो, लिखो along the direction of magnetic field, मतलब vector B, along vector B is called pitch. So pitch को small p से लिखा जाता है। इसका माने क्या है? देखो, this is the magnetic field. Now if a charge particle enters it with a velocity like this, then there is an angle theta which is not equal to 90 degree. अब होगा क्या? ये ना ऐसे घूमता रहेगा ऐसे, और ये ऐसे ऊपर उठता रहेगा। तो देख रहे हो, for one complete circular path, one complete circle मतलब if this is the magnetic field, ये यहां से शुरू किया और जब तक ये one complete circle कर लिया तब तक it has moved up to this height. कितना हाइट? यहां से लेके मान लो यहां तक का हाइट पूरी कर इतना। This height is called pitch. ये हाइट, मान लो मैं अगर एक स्प्रिंग को ले लूं, स्प्रिंग यहां से शुरू हुआ तो देन ये स्प्रिंग मान लो ऐसा करके जब तक ये कंप्लीट एक बार घूम के आया यहां से लेकर ऐसे, तो देखो ये 180 डिग्री घूम गया, मतलब ऐसे यहां से शुरू हुआ, ये पेन कहां गया? इससे, या तो मैग्नेटिक फील्ड से निकाल। देखो चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ग्रीन पॉइंट, यहां से शुरू हुआ तो यहां से शुरू होके जब तक एक बार घूम के वापस आता है वहीं पे इसका वर्टिकली ऊपर तक जितना लेंथ ऐसे ऊपर उठ जाता है, दिस लेंथ इज कॉल्ड पिच। इजी करो, बोलो डब्बा ले लो कोई, उसको एक बार घुमाओ 360 डिग्री, इफ यू टर्न द कैप ऑफ अ कंटेनर तो कंटेनर ऊपर उठ जाता नहीं है। सो द अमाउंट इट मूव्स अप ड्यू टू रोटेशन ऑफ वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ, उसी को पिच बोलते हैं कोई भी चीज का। स्क्रू हैव दिस थिंग्स, एनी थ्रेड हैज दिस थिंग पिच।
तो वन कंप्लीट सर्कल यहां से शुरू करके ये अगर यहां तक आएगा, वन कंप्लीट सर्कल ऐसे करके घूमते घूमते जब ये कंप्लीट करता है तब तक ये इतना ऊपर उड़ गया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। तो ये पिच जो होता है इसमें टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू नो। थिंग नंबर वन कि ये जो ऊपर का तरफ जा रहा है, व्हिच वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, v cos थीटा ना v sin थीटा, v cos theta, and this velocity was uniform because no force was acting along this. So the distance moved, that is pitch p. Pitch means nothing but a distance. So the distance moved, pitch, equals to s is equal to vt. It is a distance only. v माने v cos theta into t माने कौन सा टाइम, t is the time complete rotation, one complete rotation का टाइम, कैपिटल T, बस दैट्स इट। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको हटाते हैं, v cos theta। अच्छा टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था, मैं बोला था ऐसा करके याद रखना, m by qb, 2 pi m by bq व qb। यस इतना होगा, लंबा चौड़ा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, इसको छोटा बनाओ। छोटा कैसे बनाएंगे, वेरी इजी, कैसे, देखो एक काम करते हैं, इसको ना ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई, इट रिमेन्स द सेम। साइन थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो भी साइन थीटा इंटू एम, सो ऊपर में क्या हो गया, एम भी साइन थीटा, नीचे बी क्यू। Very known to us. What was that quantity? mv sin theta by bq. mv sin theta by bq. What was that quantity? mv sin theta by bq. देख लो तो एक बार. so the radius, That is the radius. That is the radius. That's why उसको ऐसे किए. ये m v sin theta by bq means radius. अच्छा तो हो गया, चलो क्या बचा देखो, 2 pi लिख रहा हूं मैं, 2 pi। ये जो एम भी साइन थीटा बाय बी क्यू आ गया, ये कौन है, रेडियस, लिख दिया रेडियस। और बचा क्या फिर, दिस cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा माने, सो p इक्वल्स टू 2 pi r cot थीटा, p means pitch, pitch of the charged particle is 2 pi r, 2 pi r सर्कल के लिए इंटू कॉट थीटा, थीटा एंगल, थीटा 90 होने से कॉट थीटा का वैल्यू कितना आता है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, माने ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल, थीटा 90 डिग्री, कॉट थीटा 0, कॉट 90, तो p का वैल्यू कितना, 0, दैट मीन्स द पार्टिकल विल नॉट हैव एनी पिच, मतलब ढक्कन घुमाते जा रहे हो, खुल नहीं रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है कैप ऐसा केस हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड बीइंग परपेंडिकुलर टू दिस, याद आ रहा है वो प्लेन ड्रॉ किए थे ऐसे परपेंडिकुलर, तो अलोंग दैट प्लेन अगर एक बार आ गया तो वो उसी प्लेन में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, माने दैट विल गो ऑन रोटेटिंग अलोंग दैट प्लेन, दैट्स व्हाई इट विल नॉट हैव एनी पिच। क्लियर हो गया सारे डिटेल्स। सो ये जो है ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दैट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ। लास्ट पार्ट एक बाकी है, लास्ट पार्ट, चलो इट विल बी कंप्लीट, and that is concept part. Huh? So the chapter says This part only, this chapter has 3 parts: motion of effect of magnet on current, effect of current on magnet, and effect of current on current. Out of that we are doing one part only, that is motion of a charged particle. That part will be complete. That is this thing: if a charged particle is moving and it has got magnetic field both to its left and right,
इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, then only it has got the freedom of moving in a circular path. तो ऐसा ही तो होता है, नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है, और नहीं अगर हुआ तो क्या होगा वो देखते हैं बस. दैट इज द लास्ट वन. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. इसमें लेफ्ट साइड भी मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड भी मैग्नेटिक फील्ड. ये चार्ज पार्टिकल को अचानक से नींद टूटा और सोचा कि अरे मैं मूव करूंगा. How is this possible? A charge particle initially at rest suddenly starts moving. How can you make a charge particle move? फोर्स दिए, Who applies force on a charge particle? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक. Magnetic field doesn't apply any force on a charge particle. Net force 0. Centripetal force 90-degree angle, work done 0. It applies a force, but the work done is 0. That's why it cannot accelerate that charge particle. Another thing, no magnetic force will act. Why I said that? Because F equals to B, Q, then what comes? V. I'm telling you that this charge particle is at rest. So what is the value of this V? 0. So no force will act on the charge particle. That's why I told you that magnetic field will not apply any force on the charge particle if it is at rest. तो इसको फोर्स देगा कौन? एक ही उपाय है, कौन? चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है. नाउ ये स्विच्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, स्विच ऑन कर दिया, उससे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड माने जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ चार्ज पार्टिकल इंस्टेंटली विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. बस हो गया उसका वेलोसिटी भी. That's why we require to establish both electric field to give it motion and magnetic field to turn it in a circular path to have a complete effect. And that is called electromagnetic field. And the force acting on a charged particle in an electromagnetic field is called Lorentz force. The thing that we started with. And the last part here. The last part is that we cannot believe that there cannot be the magnetic field on both the sides of this charged particle. Okay. If this is the magnetic field, say B, this is the magnetic field. Cross in this direction. 2-3 ड्रॉ करने से चले. Magnetic field. Okay. And it is of this thickness. That means this is the width of this magnetic field, D. Now a charged particle enters this like this. Say at 90 degree. It will enter this at theta equals to how much? 90 degree. 90 degree. So it will move in a circular path like this. When the semicircle is complete, it will come out of this magnetic field straight. What is the reason? एक आइडिया बता रहा हूं सुनो. Velocity का साथ, if a particle moves in a circular path, समझ रहे हो, तो velocity would be tangential all the time, along the tangent, velocity, along the tangent. तो tangent का साथ perpendicular कौन होगा? That is velocity का साथ perpendicular कौन होगा? Radius. Radius. तो सोच के देखो, if the velocity at this position is like this, ऐसा है velocity इधर, तो इसका साथ perpendicular कैसे ड्रॉ करें? We can draw it upwards or downwards, किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, but we will draw this upwards. कितना ड्रॉ करेंगे भाई? इधर होगा कहीं पे. Similarly, when it is moving up, we have already known the fact that a magnetic field cannot accelerate a charged particle. Cannot. Work done 0. So V equals to U. Work energy theorem. Remember that. So if it enters the magnetic field with a speed V, it leaves the magnetic field with the same speed V. It will not change its speed. Direction will change, but speed will remain same. First thing. Second thing, notice karo, if the velocity at this position is like this, horizontal again, its radius would be like this. So we can say that this will be the center O.
and this is one radius, this is another radius. Okay, and you can say this is another radius. So it moves in a circular path like this. Semicircle comes out of it. Pura circle hua? Nahi hua. Because when it comes to this position, the velocity being tangent to this, देखो velocity यहाँ पे कैसा हो जाएगा? Tangent. So when it comes out of the magnetic field, there is no field outside this to apply any force on this to make it rotate in a circular path. अब तो magnetic field खत्म हो गया ना? So it would be moving with the same speed. Newton's first law of motion, straight जाता ही रहेगा, and will live happily ever after. तो खैर जो भी है, so it will be moving straight following this path. This is one case. There may be another case. कैसे? ये case तो हो गया. Another case कैसे? If the magnetic field is like this is the second case. If the magnetic field is like this, थोड़ा सा narrow minded है, I mean minded नहीं, मतलब इसका gap थोड़ा narrow है. This distance is somewhat less. अब क्या हुआ कि a charge particle enters the magnetic field with the speed v again. Okay. Now it follows the circular path like this. टैव 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 हुआ, जैसे ये टैव हुआ, ये टैव पे क्या हो गया? The width of the magnetic field d is equal to the radius of the circular path of the charged particle. अब क्या होगा? Now the velocity of this charged particle will be vertically upwards, being tangent to this as. अब यहाँ पे जो velocity होगा v, charged particle, यहाँ पे जो velocity होगा v as, that would be tangential, और ये ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा. It will not come back. और यहाँ पे क्या देखे थे? D बहुत बड़ा था, मन बड़ा था इसका, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, चौड़ा था, उसका रिस्पेक्ट में R छोटा था, radius. And there may be a case, last case, and easier. That is, the last case, that is, अगर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इतना सा, और इसका रिस्पेक्ट में, अच्छा इसको छोटा नहीं ड्रॉ करते चलो, क्योंकि ज्यादा छोटा ड्रॉ करेंगे, it will be problem for you. It will be problem for you to draw this. Magnetic field ऐसा है. अब ना एक चीज तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मोर द स्पीड मोर द रेडियस, ये सब लेके रेशियो निकालने वाला सम्स आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है. क्या? मोर द स्पीड्स, इफ थीटा इज 90 डिग्री क्या होगा? mv by bq r इक्वल्स टू, क्यों? साइन थीटा साइन 90 1 होगी. सो इफ थीटा इज 90 डिग्री वी कैन ऑलवेज यूज दिस थिंग. वो जो था ना mv साइन थीटा बाय bq, वो सिर्फ थ्योरी में करना, मतलब 99% केस में यही देता है, थीटा 90 डिग्री, दैट मींस mv by bq r इक्वल्स टू हुआ. अब नोटिस करके देखो, मोर द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी, मोर द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस. तो अगर मान लो ज्यादा स्पीड से कोई आ गया चार्ज पार्टिकल, हाई स्पीड लेके, वेरी हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल आ गया, तो क्या होगा? ये तो बेंड तो करेगा, पर इसका रेडियस तो अरे तो छोटा पड़ गया. अगर इसका बस चले तो ये ऐसे घूमता, लेकिन उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉलर देन दिस. तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अगर स्मॉलर हो गया ना, यहां तक तो आया ना चार्ज पार्टिकल. Now at that point we will draw a tangent from here at this position. Along that tangent it will continue to move in a straight line following this path.
और सर्कुलर पाथ इसका होगा ही नहीं, इसका स्ट्रेट लाइन में अब निकल गया ना, वंस इट इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नो लॉरेंस फोर्स, इट विल बी मूविंग स्ट्रेट इन अ सर्कुलर पाथ। नाउ झटाझट ये कर दो, क्लास 9-10 वाला छोटा सा ट्रायंगल एंगल बनाते चलो। कैसे? ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का साथ परपेंडिकुलर ऐसे कौन होगा? रेडियस, तो वेलोसिटी का साथ परपेंडिकुलर ये होगा रेडियस। सिमिलरली दिस इज अनदर वेलोसिटी v, इसका साथ भी तो परपेंडिकुलर होगा, ये v का साथ भी तो परपेंडिकुलर होगा कौन? रेडियस, तो इसका साथ भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रेडियस। कैसे? और ये भी रेडियस, तो यहां से कितना ऊपर करूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये भी कितना पीछे जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। दोनों जहां पे कट करेगा वहां पे कौन होगा? ऑब्वियसली सेंटर, रेडियस रेडियस जहां पे कट करेगा, ऐसे सेंटर का आइडिया मिलता है। तो सेंटर अगर ये हो गया ओ, ठीक, तो इसको आई हैड डॉटेड ड्रॉन इट डॉटेड लाइन। अगर ये सेंटर हो गया तो देखो तो एक चीज, ये जो v वेलोसिटी लेके निकल गया, इट विल बी मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सपोज दिस इज थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इफ दैट इज थीटा, अच्छा ये 90 डिग्री है, ये तो क्लियर है, this angle is 90 degree, we can well understand this because this is tangent and this is radius। ये कौन है? रेडियस है ये r, और ये टेंजेंशियल है वेलोसिटी, तो ये तो 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? भाई तीनों मिला के 180 डिग्री होना है ना, उसमें से ये 90 हो गया तो बाकी ये दोनों मिलके 90 होगा। चलो 90 माइनस थीटा, उसमें से ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? थीटा। सेंटर होगा इसका, बस हो गया, इतना ही था। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इसको पॉक्स हो गया, मतलब ये जो पॉक्स ट्रायंगल है ना, ये पॉक्स ट्रायंगल को देखो और यहां से देखो तो साइन थीटा क्या आ रहा है? साइन थीटा, दिस इज द विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड D, width of the magnetic field D, that means this is the width of the magnetic field D, and this is nothing but the radius R, this is the hypotenuse। तो उस हिसाब से sin theta perpendicular by hypotenuse, that means D equals to R sin theta। अगर इससे सम बनाओगे, यू विल बी फाइंडिंग सो मेनी न्यूमेरिकल्स विद दीज आइडियाज। तो यही एक छोटा सा एक लाइन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी आइडियाज, ये छोटा सा एक लाइन विल फेच यू 2 marks इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ये काम आए दैट D इक्वल्स टू, ये D इक्वल्स टू कितना होगा? रेडियस R, उसका साइन थीटा। बस फ्रॉम दिस, अगर मान लो कि थीटा दिया हुआ है, जनरली यही होता है, थीटा जनरली गिवन रहता है, D गिवन रहता है, R फाइंड करना हो। तो ये हुआ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेट। जो बहुत हो गया, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। স্যার বাকি নেক্সট এই নোটসটা পিডিএফটা শেয়ার করবেন? হ্যাঁ করব, গুড ঠিক আছে, গুড নাইট। হ্যাঁ বাই। স্যার স্যার আপনার সাথে না কথা ছিল, আমি কল করেছিলাম সকালে। আজ আর হবে না, কাল সকালে করো।